अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट आर दीज हाइड्रोकार्बन्स? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन एंड कार्बन के बने होते हैं। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, these are of two types. First one, that's called saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons. So what are these saturated hydrocarbons? They are the compounds which contain single bonds. Single bonds. तो वो compounds जिनमें single bonds होते हैं, या we may say that there is uniform distribution of electrons. Uniform distribution of electrons. For example, alkanes, which have the general formula CnH2n plus 2. तो इसको हम लेटर डिटेलर डिस्कस करेंगे। सेकंड, that we called unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. So what are these unsaturated hydrocarbons? Here you will see in unsaturated hydrocarbons there are double or triple bonds. Double or triple bonds. Rather, you may say there is non-uniform distribution of electrons. Distribution of electrons. For example, alkanes having general formula CnH2n, or alkynes having the formula CnH2n minus 2. तो ये अल्केन्स जो कि हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखे, या अल्कीन्स या अल्काइन्स, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इस अल्केन को देखने के लिए, इसकी सीरीज़ को देखने के लिए, फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन वी सी द नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज, जब हम इनका नाम देते हैं फिर, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके कार्बन के कितने एटम्स हैं उनको काउंट करना पड़ता है, और काउंटिंग से ही नॉमेनक्लेचर शुरू होता है। सो फॉर एग्जांपल, when you see in the compound there is only one carbon, you will say it is meth. 2 carbons, it is eth. 3 carbons, it is prop. 4, it is bute. Compounds which have 4 carbon atoms is called, we can start with its name with the prefix bute, and 5, that's pent, 6, that's hex, 7 carbon atoms, that's hept, 8, that's oct, 9, that's none, and 10 carbon atoms, that is dec.
So to begin with this saturated hydrocarbons which we have defined earlier, that these are the hydrocarbons, these are the compounds which have hydrogen and carbon but with the single bond. For example, alkanes. So alkanes, now what is the general formula of these alkanes? That is CnH2n plus 2. Let the number n is equal to 1. So first one compound carbon, n is equal to 1, H 2 ones are 2 plus 2, that's equal to 4. So when we name the compound, here one carbon is present, carbon, that we called meth, and they are from the family homologous series that we called alkanes. So we add this ane with this meth, so we called methane, and its structure is one carbon atom and there are 4 hydrogens. So this is the structure of this methane. So you will see here there is uniform distribution of electrons. हर तरफ से जो electrons है वो बराबर distribute हुए हैं. तो like इसका molecular structure अगर हम देखें, कार्बन, तो कार्बन की वैलेंसी जो 4 होती है और हाइड्रोजन जब हम देखें तो इसकी वैलेंसी होती है 1. तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन्स के साथ 4 कार्बन एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है. तो यहाँ से हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई. तो कार्बन, एक कार्बन एटम इन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन ने हर एक हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है. तो एक एक, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली इसने शेयर किया है विथ ईच हाइड्रोजन एटम. सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. Now when n is equal to 2, that means C2 H 2. 2 2s are 4, 4 plus 2 6. So 2, when there are 2 carbons, 2 carbon atoms, we called it, and we add this fax ane, that we called ethane. So this compound is named as ethane and its structure is 2 carbon atoms with 6 hydrogen atoms. So you will see here once again there is uniformly, rather we may say equal distribution of electrons. हर तरफ से इलेक्ट्रॉन्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए. हर एक हाइड्रोजन या कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्डिंग की तो एक एक इलेक्ट्रॉन हर तरफ से शेयर किया. सो दैट्स कॉल्ड, दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ दिस फैमिली दैट वी कॉल्ड ethane. And there are single bonds, rather we may say uniform distribution of electrons, so they fall in the group of saturated hydrocarbons. Now n is equal to 3, so it will become C3 H 8. 3 2s are 6 plus 2 8. So when we see 3, that's called a prop, and we have to add this ane, so it becomes propane. So the structure is 3 carbon atoms
with 8 hydrogen atoms. So that is propane. So same way you will change here the number. N is equal to 3. Now N is equal to 4. C4 and H10 with the formula, this formula. So 4, when we see 4, it's called bute, and we add ANE, that means it becomes butane. So the molecular structure in the same way, 4 carbon atoms with each and every side equal distribution of this electrons, equal sharing of electrons, equal number of electrons are shared on either side. So that's why these are called saturated hydrocarbons, and also they have a single bond. So you will go on adding now. N is equal to 5. I hope you will understand and practice it. Thank you.